लीजिए हमारी चॉकलेट फ्रेंच टोस्ट तैयार हो गए। अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं और चाय गरम गरम चाय के कप के साथ नाश्ता करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। और ये नाश्ते में बहुत ही जल्दी बनने वाला ये नाश्ता है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ अपने कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स मिलते हैं, तो फिर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इससे भी ज़्यादा और अच्छी तरह बनाऊँ ताकि आपको और अच्छी डिशें बनानी आए। तो इसके साथ ही अपनी बहन यास्मीन को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।